నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోట అంతరిక్ష పరిశోధనా కేంద్రం మరో రాకెట్ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. PSLV C-29 రాకెట్ ప్రయోగానికి కొద్ది నిమిషాల్లో తెరలబోతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. दूरी पर इसलिए अब मेरी खामोशी और मेरी आवाज के साए में मिशन कंट्रोल सेंटर से उद्घोषणा की प्रतीक्षा. We go quiet and let you have a feel of the launch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1. Clear for ignited. 3. Going to lift off normal. सफल प्रज्वलन. 7, 8, 9. आकाश की ओर बढ़ता PSLV C-29 गर्भ के साथ 15 seconds. PT tracking. एक धुएं की लकीर छोड़ता अपने पथ और गर्जन दोनों एक साथ कटाचे. 25 seconds. अनुमानित पथ बिल्कुल अवलोकित पथ को फॉलो करता हुआ उसका अनुसरण करता हुआ 30 सेकंड का समय व्यतीत. बिल्कुल सफल प्रज्वलन. Plus 40 seconds. You can see a wonderful Stage performance normal. lighting up the evening sky here, and right now PSLV is Plus 50 successfully seconds. negotiating the dense atmosphere of Earth with its thrusting power. Plus 55 seconds. As you can see, the vehicle is flying Plus 1 exactly minute. planned trajectory with no deviations at all. The flight till now is nominal. We are about 65 seconds into the flight and we are transgressing the atmosphere in a perfectly planned manner. ठोस कोर चरण जमीन पर प्रज्वलित हो जाती है. प्रथम चरण यान को लगभग 55.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.65 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करते हुए 1 मिनट 53 सेकंड के बाद पृथक हो जाएगा और हम बहुत ही नजदीक इस पृथककरण के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पृथककरण का. कितना स्पष्ट स्वरूप आप देख पा रहे हैं हमारे प्रक्षेपण यान का. PS1 has separated as beautifully and PS1 PS2 stage is ignited. separated. PS2 engine started. Plus 2 प्रति minutes. चरण प्रज्वलन हो उसका प्रज्वलन हो चला है और इस समय वो अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ. We are at an altitude of 75 kilometers and already covered 50 kilometers of range. The vehicle velocity is 1.5 kilometers per second and we are slowly approaching the next Second event, stage performance that is the normal. separation of the heat shield. As we climb in altitude and reach about 115 kilometers, the heat shield will no longer be required as we have crossed the atmosphere. And then the heat shield can be ejected, and this ejection is a process which has been very carefully designed, and we are now very closing in to the heat shield separation. जी हाँ, ऊष्मीय सुरक्षा कवच Heat shield पृथक्करण separated. बहुत सफल पृथक्करण हुआ ऊष्मीय सुरक्षा कवच का. Plus 3 minutes. और उससे भी आगे बढ़ता हुआ द्वितीय चरण प्रज्वलन के दौरान इसे लगभग 146.7 सेकंड का समय व्यतीत Second करना stage है. performance normal. लगभग 2.4 मिनट का अभी तक सामान्य निष्पादन. इस समय हम लगभग 204.8 सेकंड समय व्यतीत करते हुए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेग प्राप्त कर चुके हैं और हम 178 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचे हैं. PS2, our second stage, which is now performing, is a liquid engine having a steady state thrust of 800 kilonewtons. It has a total burn duration of 150 seconds and it has a specific impulse of 293 seconds. It will nominally shut itself off Plus when 4 the minutes. guidance will command it at the required target conditions being met. We are very close to it and we expect the shut-off to happen in about 10 seconds time. The performance of flight till now has been near nominal, as you could see from the plots. PS2 stage separated.
जी हाँ, द्वितीय PS3 चरण stays अलग हो चुका ignited. है और तृतीय चरण का जो प्रज्वलन है वो भी उसके भी शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। सामान्य निष्पादन लगभग 4.5 मिनट का समय गुजर चुका है। कुल चरण जब ज्वलन होगा उसका लगभग 17 मिनट हम इस अभियान में बिताएंगे, जब तक 6 उपग्रहों को प्रक्षेपित और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस समय हम लगभग 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और लगभग Plus 5 minutes. 470 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से, ऊंचाई 228 किलोमीटर की। Third stage performance normal. PS3, our third stage, is a very efficient motor and has a composite motor case. This composite motor case helps us to have payload improvements as this is a upper stage of the vehicle. PS3, which is now performing, develops a peak thrust of 240 kilonewtons and burns for approximately 80 to 90 seconds. We expect a burnout of PS4 at 384 seconds, which is another 45 seconds from now. This solid motor is developed into a high performance motor with a specific impulse of 295 seconds, and the motor is Plus 6 minutes. a workhorse for us, giving its performance in terms of improved structural factor and efficiency. आकाश इतना खुला हुआ कि अभी तक एक बिंदु के रूप में हम प्रक्षेपण यान को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला चरण सॉलिड मोटर का, तीसरा चरण भी सॉलिड मोटर और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो है वो द्रव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तृतीय चरण के ज्वलन या बर्नआउट के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व एक कोस्टिंग पीरियड हो कहलाता है, जो लगभग PS3 burnout. 522 सेकंड का है। And अभी combined तृतीय चरण coasting has के started. सामान्य निष्पादन की घोषणा की गई है। अभी तक जैसा उसका निष्पादन रहा है बिल्कुल सामान्य। अगर हम पहले चरण के ऊपर ध्यान दें तो वो लगभग यान को Plus 7 minutes. 55.956 किलोमीटर ऊंचाई ले जाता है। दूसरा चरण उसे लगभग 199.676 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। तीसरा चरण लगभग 380.08 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देगा और अंतिम चरण उसे अंतिम ऊंचाई इस अभियान में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अगर हम वेग मान की बात करें तो पहला चरण लगभग 1.6478, दूसरा 4.3262, तीसरा चरण 7.521 और अंतिम चरण 7.582 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी पहुंचा देगा। We are now in a deliberate coast between third stage burnout and fourth stage ignition. This is a non-thrusting phase of the rocket Plus 8 and minutes. helps optimize the rocket trajectory and performance. In PSLV C29, the coast duration is about 530 seconds, out of which 200 seconds is combined coast of before PS3 separation. This combined coast is deliberately given because the solid motor will be still having a leftover burning and a small thrust will be generated for some time. We wait for this thrust to die so that when we separate PS4 Performance and during again combined coast coasting without is normal. igniting it, PS3 will have no opportunity to catch up with PS4 because its thrusts will be zero and there will be adequate separation velocity provided between PS3 and PS4. We are now very close to the separation of PS3, which we expect to happen at around 585 seconds. We have Plus about 9 a minute, minutes. and I would like to brief you about an activity which we do regularly for our mission. One aspect of launch clearance procedure is our collision avoidance studies with space objects in orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects
and the upper stage of launch vehicle, and also the 6 satellites once they are in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all launches from Sriharikota. There is no such concern for this mission. जी हाँ, बहुत ही नजदीक तृतीय चरण के पृथक्करण का, और हाँ इसके पृथक्करण Star 1 and 2 LOS. के सफल पृथक्करण, और अब हम चतुर्थ चरण के PS3 separated. इग्निशन की प्रतीक्षा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये चरण, Plus और 10 इस minutes. चरण में जब पृथक्करण होता है तो वो और भी असंभावी हो जाता है उसका विश्लेषण, क्योंकि किसी भी प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी होती है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। इस विश्लेषण का आधार है संघट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से, वो डेब्रिस भी हो सकती है, या यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे किसी भी संभावित टकराहट से बचने के लिए प्रमोशन समय को उपलब्ध प्रमोशन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर दिया जाता है। शार से किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका बन चुका है। आपको याद होगा कि ऐसे ही एक C-19 RI सेट में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोशन में 1 मिनट की देरी की गई, Plus 11 minutes. पर इस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने प्रक्षेपण बिल्कुल अपेक्षित समय पर किया। हम लगभग 11 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं इस समय, और लगभग जो वेगमान है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड का, और ऊंचाई 2886 किलोमीटर की, Performance और during coasting सॉरी is जो normal. परास है, और ऊंचाई 430 किलोमीटर की। हम श्रीहरिकोटा से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर। We have another 210 seconds before PS4 ignition happens, and I would like to share with you the velocity requirements and how we are giving the velocity to the satellites. The total velocity required for orbit, for placing the satellites in orbit is 7.6 kilometers per second. The first stage provides 1.65 kilometers per second, which is about 22% of the velocity Plus requirement. 12 minutes. The second stage provides additional velocity and takes it from 1.65 kilometers per second to 2.25 kilometers per second. By the time, second stage takes it to 4.3 kilometers per second. I regret the error. From 1.65, we go to 4.3 seconds per second, and 4.3 kilometers per second, and 57% of the velocity is already provided. The third stage takes it to near orbital velocities and provides an aggregate of 7.5 kilometers per second. That is, at the end of third stage, the total velocity of the vehicle is 7.5 kilometers per second. Then we get into this long coast and wait for the right opportunity of ignition to get into orbit, and the PS4 will be providing only about 200 meters per second, but it will do a most Plus important 13 job minutes. of giving a precise injection into orbit. After PS4 Performance has during injected coasting is the normal. spacecraft into orbit, we follow a standard practice of passivating the PS4. This is to keep PS4 safe in orbit and intact in one piece, and not to create unnecessary debris in orbit. Once PS4 is commanded to be shut off on reaching the intended orbit, there will be leftover propellants in the tank. These need to be vented out so that PS4 is safely intact and in one piece in orbit. The venting is carefully done by opening appropriate T-shaped vent nozzles. During this, the PS4 is also held at a desired orientation, as the just inducted spacecrafts are nearby and they have to be kept safely away. The passivation process thus vents out the remaining propellants while maintaining safe distances from injected Plus 14 satellites, minutes. and also lets us know the exact orbital position of PS4 for శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం PSLV C-29 రాకెట్ ను కక్షలోకి తీసుకెళ్తోంది. సింగపూర్ కు చెందిన 6 ఉపగ్రహాలను ఇప్పుడు ఈ ప్రయోగం ద్వారా